Right.
क्या कोई इंटरव्यू देने जा रहा कि नहीं? हाँ साल ये चुटिया पे चलते रहते हैं ना। अभी कल अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा दिन चल रहा था। ये भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पता है। तुम घर पे भी जाकर आराम से बैठोगे ना भाई, इससे तू कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या क्लास में क्या कॉन्फिडेंस घंटा बढ़ता है। समझने की कोशिश कर। मैं समझा दूंगा, इतना डर नहीं लगता सर। मैं क्या कुछ बोलता नहीं, जब आता है ना तो मैं बोल देता हूँ। आपको डर वर नहीं है साले। चलना भाई कहाँ है? Okay, so good morning, class, and welcome to the session. Okay, so let's get started. And today, we will discuss the theory of CNNs, convolutional neural network. And today, my only aim and the objective for today is to cover the theory part. And I think it will take around 2 hours. And then coding probably will do tomorrow or in next class. Well, probably I think next class will be tomorrow. My schedule is very free. Okay, so CNN. CNN stands for your convolutional neural network. Convolutional neural network. Okay. So yesterday we have created a model. We have created a model. So that was also a neural network model, and that model was created using the technique that is your MLP. MLP stands for your multi-layer perceptron. Please ab koi baatein mat karo. Multi-layer perceptron. Okay. Now this MLP can be used for any type of data. It can be used for any type of data.
So when I'm saying any type of data, it can be used for your image also. It can be used for your regression also. So later on, I'll tell you how to use this for regression. It can be used for your any classification also. It can be used for your text data also. It can be used for your time series also, anything. MLP can be used for anything, but convolutional neural network is used only for the image classification. अगर image का data है, then CNNs are the best. Any state-of-art algorithm which is trying to identify the image would be using CNN. Base में तो CNN ही होगा, उसके ऊपर कुछ भी और लगाएगा. And CNN has to be used only for the image data. Nothing else. They are specially designed for your images. अगर image का data है, then CNN is the answer. And CNN should be used only for your image data, nothing else. So later on, we will use the CNN on our that MNIST data also, and then I will tell you how to build your CNN model on the raw data. Raw data is in where you don't have your data in CSV file. You will directly read the images. अपने folder में image रखो, image को read करो और classification models build करो, ठीक है? And CNN stands for your convolutional neural network. Please मैं बार बार repeat कर रहा हूँ, CNN को किसी और problem के लिए use मत करना, सिर्फ image के लिए, image या फिर videos के लिए, ठीक है? Nothing else. Now, can you see that I have taken a snippet of 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 images दिख रही हैं? जरा बताओ तो सही कौन कौन सी images है? कौन सा ऑब्जेक्ट दिखता है image 1? Image 1, can I say ship? सब लोग एग्री करते हैं? Okay. What about image 2? यार ये इमेज 3 क्या है? एरोप्लेन, पक्का? इमेज 4 अगेन प्लेन, ठीक है? इमेज 5 है? ओके, बट उसको शॉर्ट में बोल देते हैं ट्रेन, ठीक है? लोकोमोटिव इंजन बोल देते हैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम, अ वेरी टेक्निकल आंसर. इमेज 1 को शिप क्यों बोला तुमने? क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ इस बार. व्हाई इमेज 1 इज यू आर कॉलिंग एज अ शिप? क्रूज शिप है या कौन सा भी शिप है, लेकिन है तो शिप. क्यों बोला शिप तुमने? सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है. अच्छा, इमेज 2 को प्लेन क्यों बोला? इमेज 3 को तुमने एरोप्लेन क्यों बोला? इट इज एरोप्लेन, इट इज अ प्लेन, बट क्यों? So basically मैं जो एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, so you are calling image 3, image 4 as aeroplane, which is the right answer, but do you see the complete plane in image 3 or 4? क्या पूरा plane दिखता है? नहीं दिखता, right? But still you are able to give the correct answer. It means even if you don't see the entire object, you can still do the classification. So if you don't see the entire object, you can still do the classification. Then why do you want to see a full object? पूरा object देखने की जरूरत है क्या? ठीक है? So remember, neural networks work the same way as your human brain, and human brain can make that decision without seeing the complete object. So the same thing or same technique would be used in your CNN. I can see the partial image and I can still make the decision. A complete train, full train may be, let's say, 100 meters long. Engine, and then there may be many coaches. But why do you want to see the entire 100-meter object when you can just see the front face and tell whether it is a train or whether it is a bus? Right. And keep one thing in mind, when you are doing your model building, CNN or any other thing, your aim is to identify the object. Identify the object, whether it is a train, whether it is a plane, or whether it is whatever. So for identifying the object,
I don't need to see the complete object. छोटा सा part देख लो और बता दो कैसी, right? So if you don't see the complete object, if you see only a part of it, basically what it would be doing, you would be doing your kind of data compression. I just want to do the एक data compression कर लिया मैंने. I am seeing only that part which is required to make the identification. Remember machine learning model. So when I'm trying, so let me say I am trying to identify whether the object is train or bus. Okay. So I don't need to see an entire train. I don't need to see the entire bus. Even if I just see the front part. Guys, can I make the decision? सिर्फ अगर सामने का पार्ट देख लूं तो मैं डिसीजन ले सकता हूं whether it's a train or whether it's a bus. I am not there to appreciate कि ट्रेन कितनी सुंदर है or how beautiful the bus is or how ugly or the bus or train is. My aim is to just make a decision whether the object is train or a bus. ठीक है. Suppose the same thing I want to do a classification whether the animal is cat or a dog. ये project हम लोग अभी करेंगे भी. If not today, then probably tomorrow or day after tomorrow. Cat or a dog. Then probably I don't need to see the entire cat or a dog. अगर मैं सिर्फ उनका face देख लूं तो मैं decision ले सकता हूँ. पूरी body देखने की क्या जरूरत है? Right? But as a human being, it is quite easy to just see the cat and dog face and identify whether it is a cat or a dog. But the same thing would be little difficult for the machine. Okay? Because your brain is already trained for many years and it can make a decision. So when you are making a decision, you are not learning just now. You are learning already from many years and you are using your previous knowledge to make today's decision. But for machine, it would be learning now and then it would be making a decision. So machine doesn't know that I should only be comparing the face of a dog and a cat. But slowly it will learn and it will start making the decision. Okay. So the inherent part, the main idea in CNN is I don't need to look at the complete object to make the decision. I only need to look at a salient features which can distinguish between two objects or two categories. इतना आइडिया क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Now let's start with the actual theory of CNN. So again, I'll say CNNs are used only for images. Okay. CNN consists of 3 layers. Now, see, the one requirement for this class is that you remember all the other concepts which we have discussed. You remember ReLU activation, what is data layer and all those things. Uske upar mein 3 layer और डाल दिए. It consists of 3 layers. One is your convolution layer. The first layer is your convolution layer. Then second is your pooling layer. And the third one is your fully connected layer. सब लोग प्लीज इसको नोट डाउन करो और अभी का अभी 2 मिनट में याद कर दो हमेशा के लिए. 3 लेयर्स आएंगी. पहली लेयर कॉन्वोल्यूशन होगी, सेकंड कूलिंग होगी, थर्ड फुली कनेक्टेड होगी. जब मैं मंडे को पूछूं कि वो कौन सी 3 लेयर हैं तो ब्लैंक फेसेस मत दिखाना प्लीज. ठीक है, सन्नाटा छा गया, ये क्या पूछ लिया. ठीक है, ऐसा मत करना. ठीक है, दिल पे चोट पहुंचती है मेरे. ठीक है, कॉन्वोल्यूशन लेयर, कूलिंग लेयर एंड दी फुली कनेक्टेड लेयर. पहली लेयर कॉन्वोल्यूशन ही होगी, बाद में कूलिंग आएगी, बाद में फुली कनेक्टेड आएगी. ठीक है, कॉन्वोल्यूशन लेयर, कूलिंग लेयर एंड दी fully connected layer. These are the 3 layers which would be used in convolution. Convolution layer, cooling layer and the fully connected layer. Okay. Now let's enter into each layer one by one.
convolutional layer. It is the first layer. ठीक है? So what I'll say, the main purpose of this layer is to extract the features. एक काम करता हूँ, मैं पूरा स्लाइडर दिखाता हूँ तुम लोग को, तुम लोग वहां से देखो. हाँ, रीड करो प्लीज. जोर से आवाज ना भारी होनी चाहिए, और जोर से. हाँ. It consists of three layers. First one is a convolution layer. Second one is a pooling layer. Third one is a fully connected layer. Okay. In convolutional layer, main purpose of the layer is to extract the features from the input image. It preserves the spatial relationship between pixels by learning image, which is in first step of input data. Here the matrix feature is slided towards over the image and computing the dot product, and this is called convolutional feature or the extension of feature. I know समझ में नहीं आया तुम लोग को, but समझ में आ जाएगा. So main purpose of this layer is to extract the features. Guys, सब लोग please ध्यान से देखो. Extract the features from the input image. It preserves the spatial relationship between pixels by learning image features using small squares of input data. Now, अब एक यहाँ पे एक लाइन पर ध्यान देना. Here a matrix, and this matrix is also known as a filter. A filter is slided over the image, computing the dot product. जब तुम किसी चीज को फिल्टर करते हो तो क्या होता है? सेपरेट होता है. सेपरेट होने के बाद जो निकल के आता है वो थोड़ा कम होता है. So if you are filtering the tea or filtering anything, whatever you get, the quantity of that would be little less because something you have filtered and removed. Okay. Now, here the matrix is slided over the image and computing the dot product. So, सब लोग please एक line लिखो. In CNN we compute the dot product. In CNN we compute the dot product. Later on you will understand what is dot product. ठीक है, प्लीज इस आंसर को याद रखना. व्हाट डू वी डू इन सीएनएन? वी कंप्यूट द डॉट प्रोडक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड द कन्वोल्यूशनल फीचर और द एक्टिवेशन मैप और द फीचर मैप. ठीक है, सीएनएन में बेसिकली क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं. एंड व्हाट इज द मेन पर्पस? मेन पर्पस इज टू एक्सट्रैक्ट द फीचर्स ऑफ द इनपुट इमेज. अच्छा, रिमेंबर आई सेड दैट इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैट एंड डॉग, the best thing would be you only see their face. You don't need to see their tail. They don't need to see their entire body. If you want to differentiate between train and a bus, you just see the front face, or you may see the end face or the side or whatever. You don't need to see the entire object. Okay. So the main purpose of this layer is to extract the features from the input image. And how does it extract? A matrix is slided over the image, computing the dot product. Just note down this sentence, and in next 10 minutes probably you will understand the sentence. I'll tell you what is this matrix and what is the dot product. But please कम से कम जो लोग याद नहीं रख पाते हैं वो लोग इतना तो याद रख ही सकते हैं कि उसमें डॉट प्रोडक्ट निकलता है. ठीक है, ठीक है. Matrix is slided computing the dot product, and that is why it is known as your convolution. Now let me open an Excel sheet.
अच्छा देखो, टेल मी व्हाट इज दिस इमेज। ये इमेज क्या है? स्माइल करती हुई इमेज है। अगर सैड इमेज होती तो कुछ ऐसी होती, कुछ ऐसी होती। So, so this is a smiley, and probably we can say that this square box again represents your smiley. Barabar? So in pixel format, probably it would have been represented as something like this. So all these things, जहां पे मैं green कर रहा हूं, probably these pixels, after doing your MNS data, probably I am assuming that people are aware what is pixel, right? Right. All these small square box, probably which I'm marking in green, these boxes were not exposed. So यहाँ पे values हो सकते हैं 0 values हो, because these pixels were not exposed. ये सारे values 0 होंगे. And wherever it was black, probably there may be some higher number. We can say probably यहाँ पे 1 होगा. देखो वापस smiley में जाती हुई दिखती है. So if you were asked to draw a smiley on this square box, probably this 1 and 0s can identify whether it was a smiley or not. And assume that you were to differentiate whether it was a smiling face or a sad face. So sad face कुछ ऐसा होता ना. Suppose if I draw something like this, 3, 3, 6, 6, 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So उस केस में क्या होता, तुम्हारा ऐसा हो जाता, यहाँ पे रेड होता, यहाँ पे रेड होता, लेट मी से यहाँ पे रेड होता, यहाँ रेड होता, और शायद ये वाली चीज रेड हो जाती, बराबर। अगर किसी ने सैड इमेज ड्रॉ की होती, then your pixels would have been something like this, right? So the based upon the zeros and which are non-zeros, you can make a decision whether it was a smiling face or a sad face, right? At the end, my aim is to identify which type of image it is. ठीक है ना? So based upon the pattern of the pixels, exposed and not exposed, I can make a decision whether the image is a smiling or a sad. So probably the same thing would be used in your CNN. But in CNN, the first layer is your convolutional layer. Okay. So what I'm going to do is I'm going to draw this. I'll not say draw this, but I'm going to replicate this on the Excel. मैं इसको Excel में draw करूंगा, and then what I'll do, I'll slide the slider. Remember, a slider is moved on the image. अभी पढ़ा था ना? So I'll slide a slider. ठीक है. चलो slider draw कर लेते हैं. So first of all, let me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसको हम कर लेते हैं कुछ ऐसा और स्लाइड टच दे देते हैं. अरे बाबा कौन सा टच देते, ये टच देते. ये 7 by 7 है. काउंट करो जरा. 7 and 7. ओके. फिर हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं. So पहला वाला completely 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 and 0. Then last वाला भी 0 है. इधर के भी zeros हैं.
0 0 यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। जस्ट कीप एन आई, अगर मेरे को कोई गलती हो तो बताना। तो ये भी सारा 0 है, बराबर। देन फिर बीच में इसकी नाक पे आ गया एक, फिर ये भाई साहब किधर आ गए, सेकंड। फिर 3 बार 0 0 0 0 एंड 1, फिर 3 बार यहाँ। आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक। इन सबको सेलेक्ट करके सेंटर में डाल देते हैं, और जहां जहां पे ये है, नहीं यहाँ, एक सेकंड, ये वहां वहां पे एक स्लाइड टच दे देता है। नो 9 बज गई। You notice a smiley? Now, let's say this is a original image. This is the original image. तुम लोग एक काम करो, तुम लोग भी एक्सेल ड्रॉ, एक एक्सेल ओपन करो, and don't try to create this thing. I am trying to put this on the chat window. देखो वहां से जाता है, ठीक है? This is the original image. आ रहा है? अच्छा, रिमेंबर उसमें एक सेंटेंस था, here the matrix is slided over the image computing the dot product. नोट डाउन किया था वो सेंटेंस लोगों ने? मैट्रिक्स is slided over the image computing the dot product, ठीक है? So now what I'll do is, I'm trying basically at this point, I'm trying to explain what is your convolution layer, what is the dot product. So I'm saying matrix is slided over the image computing the dot product. So I wish to explain what is the matrix, what is how it is being slided, and what is the dot product. क्लास में थी रैंडमनेस, क्या लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेल ओपन कर रहे हैं यार, इतना टाइम लगता है? ठीक है, जिसका नहीं भी ओपन हुआ है, जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है? एट द एंड probably I'll try to share this एक्सेल, ठीक है? Try understanding this concept. Matrix is slided over the image computing the dot product. So I am saying let's have a 3 by 3 का एक matrix. Okay, so let's consider this to be a slider of 3 cross 3. Yes, so slider can also be, the another name of slider is, you can say, filter. A very good point. एक slider हो गया, एक filter हो गया. You already have a original image. Okay, and I am putting some things 0 0 1, and then I'm saying 1 0 0, and 0
1 1। तुमने 0 1 0 क्यों बोला? ठीक है, अच्छा ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे माइंड में कि ये फिल्टर 3/3 क्यों लिया, हो सकता है माइंड में आया हो। एंड प्रॉब्ली अनदर क्वेश्चन माइट बी कमिंग दैट व्हाई 0 0 1 एंड 1 0 0 0 1 1। जिसके माइंड में क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अपने माइंड में ही रख, थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो प्रॉब्ली अ क्वेश्चन मे नॉट बी कमिंग दैट यहाँ पे 0 1 0 क्यों है, बिकॉज इट वाज ओरिजिनल इमेज, so the values are already fixed. And keep one thing in mind, for our understanding purpose I have taken 1 instead of 1. It can be any number till 256 because pixels can take any values from 0 till 256. So only thing is 0 indicates that pixels are not exposed. 1 or higher number indicates the amount of exposure. Suppose karo, if you are drawing an image, in the center probably it may be dark, and jahan pe tum image draw kar rahe the, on the edges it may be less dark. Okay, on the edges it may be less dark. Okay, so 0 0 1 0. Now what I want to do is I want to now what I'll do is matrix is slided over the image computing the dot product. So what is the matrix? Matrix is nothing but this 3/3 and this is your original image. So what I'll do, I'll take this thing. अब ध्यान से देखना, मैं एक ही बार से बताऊंगा. I will take this slider or this matrix and I'm saying I will slide over the image. Image पे slide करूंगा. So I'll take this 3/3 and I'll map this 3/3. And now I'll compute a dot product. अब ध्यान से सुनना, dot product कैसे आएगा. So cell number B1, which is cell number B1? This is cell number B1. This cell number B1 would be multiplied with cell number J1. Cell number C1 would be multiplied with your cell number K1. Cell number D1 would be multiplied with your cell number L1. Basically 1-on-1 mapping. Cell number B2 would be multiplied with your cell number J2. C2 कैसे multiply होगा? K2. D2 L2. B3 would be multiplied with your J3. C3 would be multiplied with your K3 and D3 would be multiplied with your L3. ठीक है, अब next iteration पे जाता हूँ, उसमें एक चीज और ऐड करता हूँ. So what I'll do, I'll multiply B1 with J1 plus C1 K1. K2 क्यों आएगा भाई? K1 plus D1 with L1 plus B2 into J2. ठीक है, so मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं. पेंट विंडो कहां गई? So I'll say B1 into J1. इसको ऐसे लिखते हैं, B1 into J1 plus C1 into K1 plus D1 into L1 plus second row में आ जाओ, B2 into J2 plus C2 into K2 plus D2 into L2. ये ऊपर वाले सारे 1 हैं, ठीक है, don't take it as 2, all these are 1s, ठीक है, plus D3 into
J3 plus C3 into K3 plus D3 into L3। इन सब का जरा कैलकुलेशन बताओ कितना आता है। अरे बड़ा सिंपल है, 1010 भी तो नंबर्स हैं। जीरो आएगा। This is also zero. This is 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 zero. See, basically, I am multiplying the 9 numbers and adding them, but at the end I will have only one answer. आखिरी में तो एक ही आंसर आ रहा है ना, हाँ या ना, राइट? आखिरी में एक ही आंसर आ रहा है। Let's do one thing. So now what I'll do is, let me create an output. So when I did this thing, finally I got the answer as 0. सबको समझ में आया? But as of now, what I have done is I have slided my matrix only on some small portion of my original image. पूरे image को पे तो slide नहीं किया. Then what I'll do is I'll take one step on the right hand side, and this would be my second step. Now what I will do, I will multiply C1 with J1, D1 with K1, and E1 with L1 plus C2 into J2. पहले क्या था? B2 था, अभी C2 हो गया। उधर में तो सेम रहेगा नंबर। C2 with J2 plus D2 with K2, so on and so forth. जरा मेंटल कैलकुलेशन करके बताओ यहाँ पे क्या आएगा? वापस 0 आएगा। Now what I'll do, I'll take a third step, and this would be my. Now what I'll do, I'll say D1 into J1 plus E1 into K1 plus F1 into L1 plus D2 into J2 plus E2 into K2. The process will continue. जरा mental calculation करके बताओ। 1 क्यों आएगा? 1 इसलिए आएगा because D2 into J2 will result 1. ठीक है ना? 1 आ जाएगा। Now what I'll do, अभी भी मैंने पूरा मैट्रिक्स तो कवर नहीं किया, एक स्टेप और लेके जाऊंगा, कुछ और कलर दे देता हूं। ठीक है? Now what will happen, I will again start with E2 into, sorry, हाँ, E1 into J1 and the process will continue. बताइए प्लीज क्या आएगा? 0 आएगा भाई लोगों? अच्छा चलो ठीक है। अब लास्ट वाला देखो। सो अब जरा स्टार्टिंग बताओ कैसे होगा? तुम बताओ कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे हम? तुमसे पूछ रहा हूँ। रेड टी शर्ट, तुम सो रहे हो? F1 into J1 प्लस G1 into K1, यस। हाँ पूरा रिपीट करो, आखिर तक जाओ। धीरे बोलो। हाँ, L2 into, ठीक है, और देन ठीक है, तो आखिरी में आंसर क्या आ जाएगा? Q1 F2 into J2। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? ठीक है। नाउ सो basically what I have done is, as of now I have done a slide from left to right, but have I covered the entire image? क्या पूरी image को cover किया है? नहीं किया है हमने। So what I'll do is, then I have covered till this point,
Then what I'll do is I will come back over here and I'll do a column shift. देखो मैं इसको ना ऐसे उतारता हूँ. Let's say this you had already done, and then what I'll do is I will cover this part. ऊपर और नीचे की इमेज में डिफरेंस दिखता है. Now what I'll do is, तुम बताओ अब क्या होगा लॉजिकली. किस किस नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे? सेल नंबर्स का नाम लीजिए. सपोज करो मैंने ऐसा करा. नहीं बाबा तुम भटका रहे हो क्लास को. सपोज करो अब मैं एक कॉलम नीचे आया तो ये नया हो गया. तो आई विल से B2 इंटू J1. ये तो चेंज नहीं होने वाला. B2 इंटू J1. अब आगे बताओ. हाँ हाँ यस यस कंटिन्यू करिए. यस 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 K2 बराबर. ठीक है. यस L2. यस कंटिन्यू. यस नहीं B3 B4. हाँ J3. यस K3. यस yes now that's right. समझ में आया. Again let me repeat for those who are in online. So what I'll do is, so basically इसको मैं हटा देता हूँ. This will just confuse others, everyone. And ये क्या है? लाल पीला हो गया. Okay, so basically now what I've done, I have shifted one column below. So what I'll do, I'll say B2 into J1 plus C2 into K1 plus D2 into L1 and the process continues. अब बताओ यहाँ पे क्या नंबर आएगा? 1. Why? Because you would be multiplying D2 with L1. D2 with L1. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. ठीक है. Then what I'll do, the same thing I'll repeat. I'll take one step on the right hand side. तो ये हो गया सपोज करो. Now वैष्णवी तुम बताओ अब कौन कौन सी चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे? यस C2 into J1. yes plus D2 into K1. yes plus E2 into L1. कंटिन्यू करिए प्लीज. यस ओके. E2 into L2. ठीक है बराबर. कंटिन्यू प्लीज. ठीक है तो क्या आएगा आंसर? Y1. So answer would be 1. Why? Because E4 into L3, right? So यहाँ पे आंसर बना जाएगा. Okay. ऑनलाइन में जो लोग हैं guys, are they clear? Are they with me? ये numbers कैसे आ रहे हैं? What is the calculation we are doing? Yes sir. ठीक है. अगर कोई डाउट है तो अभी बताओ. ठीक है. पूरा होने के बाद कोई बोलेगा फिर से बताओ तो वो मैं नहीं करने वाला. अगर कोई डाउट है raise it right now. What we are doing. ठीक है. Basically we are sliding this filter or you can say slider on the images and I'm taking one step at a time. So first of all, I'll travel left to right. When entire image is covered, then I come one step below. Again, I am repeating it. यहाँ तक हुआ? Then shall we continue? अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लें, लर्निंग रेट बढ़ा लें. अब तुम लोग बताते जाओ क्या क्या नंबर्स आएंगे. Keep one thing in mind, number can be more than one also. पक्का 2? मैं कर नहीं रहा हूँ कैलकुलेशन. जो तुम लोग बोल रहे हो वो कर रहा हूँ. चलिए नेक्स्ट स्टेप. अच्छा रुक जाओ मैं आइडेंटिफाई करता हूँ किसको. तुम बताओ यहाँ पे क्या नंबर आएगा. हाँ
पक्का? अच्छा रुक जाओ, हम भी देख लें, क्लास पे भरोसा नहीं है। हाँ 0 बराबर, ठीक है। यू टेल मी व्हाट वुड बी द नंबर ओवर है? 2 1 0 5 10 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 पक्का? ठीक है चलो, अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, नाउ दिस लाइन इज डन। लेट्स डू वन थिंग, इन सारी चीजों को हम ऐसे कर देते हैं, है ना? So now what I'll do is I'll start from the third row, right? कौन सा कलर था वो? Now let's start from this point. 2 3 4 तुम बताओ क्या आएगा? 1 पक्का? Yes 1 because of C5 into K3 बराबर, ठीक। Now let's slide it quickly. 0 okay, फिर अभी ये वाला स्टेप कोई नहीं बताएगा। लेट मी पॉइंट आउट ऑफ अ पर्सन, ठीक है? सो ये सेकंड स्टेप हो गया। नाउ लेट मी टेक अ थर्ड स्टेप। यू टेल मी ऋतुजा, व्हाट वुड द वैल्यू ओवर हियर? पक्का? कैसे 1? या देखो तो सही, मुझे लग रहा है 2 आएगा। थ्री भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी कम हो सकता है। 4 भी ऐसे आ सकता है। सारे नंबर बोल दो, फिर सबकी प्रोबेबिलिटी, है ना? है पक्का? एक सेकंड, लेट मी हैव अ क्विक ग्लांस। यस, आंसर इज 0। फिर एक सेकंड रुक जाओ, अभी मैं लेट मी आइडेंटिफाई पर्सन एंड देन प्रोबेबली लास्ट। तुम बताओ यहाँ पे क्या आएगा? पक्का? बाय 2? ओके ओके, फिर ना तो कितना आया? चलो ठीक है, और यहाँ पे पक्का? बिकॉज ऑफ दिस वन, ठीक है। D5, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स टेक वन स्टेप डाउन, वन स्टेप डाउन। नाउ व्हाट वुड बी द वैल्यू? 1, ओके ठीक है, फेयर इनफ। देन 3 टेक वन स्टेप डाउन, सॉरी वन स्टेप ऑन द राइट हैंड साइड। 3 1 2 3 4, yes this would be 4, ठीक है, fair enough. Take one step more further. Make sense too? अब make sense? Now the last one. 0, fair enough. Now let's come to the last layer. 0, ठीक है, फिर 1 0 0 0 पक्का? 1, and why this one? Because of D6. D6 and J2. D6 into J2, fair enough. Thank you. अब बताइए, and why 2 guys? ठीक है, 2 आ जाएगा, and this would be 1. Yes, 1. यहाँ पे भी 1. F6 and J2. अच्छा, G
F6 and J2. F6 and J2. J2. ठीक है, fair enough. One आ जाएगा. Now this is the output after the convolution layer. ये आउटपुट आफ्टर द कॉन्वोल्यूशन लेयर. ठीक है, अब सबको समझ में आ रहा है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? This is the output after the convolution layer. Now, do you notice one thing, class? What was my original image? My original image was 7 cross 7. 7 cross 7, which means it was having around 49 cells. और जरा in output कितना आ गया? 5 by 5. Output is your 5 cross 5, which is nothing but having 25. Now, almost half होती हुई दिख रही है. 7 का हाफ तो वैसे 3.5 होता है, बट जब तुम स्क्वायर लेते हो तो नंबर्स तेजी से बढ़ते हैं. So previously they were around 49 and now it is 25. ठीक है. Now, and remember, I don't want to see the entire image. I only want to see a part of the image to make my decision. ठीक है. So this is what your convolution layer is. ठीक है. So you slide the slider and you get the out. ठीक है. ये हो गया हमारा कॉन्वोल्यूशन लेयर. अब क्या करना है? इसे ड्रॉ करना है, क्या करना है? नहीं तो चाहो तो मैं इसे भेज भी सकता हूँ, अगर if that helps. Otherwise, I'll share the sheet later on. I'll just email that sheet. ठीक है. Now, so basically in convolution layer, if you notice, what we have done is we have compressed the image. But we have compressed the image, or you can say a kind of dimensionality reduction has been done. So we might have lost some information. कुछ information तो कम हो सकता है. We might have lost some information, but we still preserve the spatial relation. Space में उनकी relationship कैसी है? The inherent relationship is still being preserved. And remember, I'm not here to appreciate how good or how big the object is. I am here to differentiate whether the object is object A or object B. वो cat है या dog है. Cat कितने साल की है या cat बूढ़ी है, वो मेरे को पता नहीं लगाना. वो पता लगाना फिर कुछ अलग करना पड़ेगा. ठीक है. So we might have lost some information, but we still preserve the spatial relationship. ठीक है. Keep this thing in mind and revisit the output. ये output जो है इसको revisit कर लेते हैं. Let's mark it as white. Now, yes. थम्बा ठीक है, थोड़ा वेट करो. ये क्वेश्चन मेरे हिस्से का है, उसको तुम आंसर करोगे. ठीक है. Do you notice that the image might have got some distortment? थोड़ी तो डिस्टॉर्ट होती हुई दिख रही है, but spatial relationship अभी भी कैप्चर करता है. So remember, if your aim was to differentiate between a smiling face and a sad face, then these numbers would have been different in your sad face. बराबर? These numbers would have been different in sad face because this number, so these 333 may not be there. हो सकता है तुम्हारा यहाँ पे 1 आता,
या यहाँ पे 1 आता, then the spatial relationship may have been different. So some information I might have lost, but I am still capturing the spatial relationship. ठीक है ना? But working on a 7x7 image and working on 5x5 image, the computation required to work on 5x5 image would be quite less compared to working on an image which is 7x7. So time भी बचेगा और पैसा बचेगा. ठीक है ना? So that is one thing which I wish to achieve from my convolution there. ठीक है. यहाँ पे 1 आएगा पक्का. यहाँ पे 1 क्यों आएगा? जिसने बोला है, देखो जरा चेक करो, इस वाले हिस्से को चेक करो जिसको मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ. क्या यहाँ पे 1 आएगा? तो किसने बोला था 1 है? हैं? बताओ. पूरी क्लास मिल के गलत गलत आंसर देते हो. यहाँ पे 1 आएगा? नहीं ना? तो फिर अब रिविजिट करना पड़ेगा. तुम लोग ने धोखा दे दिया. जरा इस वाले सेल पे नजर डालो. यहाँ पे 0 आना चाहिए या कुछ और? हो सकता है 0 आ रहा हो. ये 2 0 आएगा पक्का. अच्छा. और जहां पे तुम लोग ने 2 लिखा है, ये वाला 2 यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये सेकंड रो में आएगा ना, ये वाला हिस्सा, राइट? 2 आ रहा है. ठीक ठीक है. तो फिर ना, सो आउटपुट आफ्टर द कन्वोल्यूशन देयर. नाउ बिफोर वी मूव एनी अहेड, लेट्स डू वन थिंग. So my input was 7x7. Slider was 5x5. Sorry, so slider was 3x3. Slider was 3x3, and output was 5x5. ठीक है. अब मैं तुम्हारे दिमाग से थोड़ा सा मैथ्स कराना चाह रहा हूँ. ठीक है. बेसिकली इफ आई वांट आई कैन टेल यू द डायरेक्ट फॉर्मूला, बट डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा तो तुम लोग को 2 दिन याद रहेगा. इनडायरेक्टली बताऊंगा तो शायद ज्यादा दिन याद रहेगा. नाउ सपोज try doing a calculation or imagination. Let me say slider is still 3x3, but this time the input image is 10x10. Then what would be the size of output? Imagine करो, एक 10x10 का इमेज बनाओ और देखो.
Input is 10 cross 10. Slider is again 3 by 3. Then what would be the shape of output? Okay. कितना होगा? सबकी प्रोबेबिलिटी भी बताते जाओ। 8 by 8 कितनी प्रोबेबिलिटी से अंदर। मैंने क्या बोला? इमेजिन करो, एक एक्सेल शीट में जाके 10 by 10 का इमेज को ड्रॉ करो, इमेजिन करो और सोचो उस पर 3 by 3 का स्लाइडर मैं करूंगा तो आउटपुट कितना आएगा। हम्म, 5 by 5 पक्का। तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना। 8 by 8
Okay, guys. So let's move ahead. Okay. So when the input image is 10 by 10 and slider is 3 by 3, then what is the output? 8 by 8. When the image is 12 by 12, slider is 3 by 3, then what is the output? 10 by 10. ठीक है. यहाँ पे comfort आता हुआ दिख रहा है. Suppose करो image is 24 cross 24 and slider is 2 cross 2, then what is the output? फॉर्मूला अगर डिराइव कर लिया होगा तो आंसर फट से आ जाएगा. 23 by 23. ठीक है. सो बेसिकली इट इज n minus k plus 1. याद आ रहा है? एडजस्टेड आस्कर में भी नीचे सेम फॉर्मूला यूज करते थे, वेयर n is a dimension of your image, k is a dimension of your slider. ठीक है. So 20, if image is 24 cross 24, slider is 2 cross 2. So 24 minus 2 is 22. 22 plus this is 23. ठीक है ना? 23 cross 23. So n minus k plus 1. ये फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे. इस इतने छोटे से फॉर्मूले के लिए 10 मिनट लगाए मैंने. एटलीस्ट अब याद रखना. So एक क्विक क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं, और नहीं भी पूछा तो तुम्हें पता होना चाहिए. इफ यू इंक्रीज द साइज ऑफ अ स्लाइडर देन द आउटपुट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. अगर तुमने स्लाइडर 10 by 10 का ले लिया एंड इमेज इज ऑफ योर 24 by 24, तो 24 minus 10 plus 1 कितना हो जाएगा? 15 cross 15 की इमेज आती हुई देखेगी, राइट? सो इफ यू इंक्रीज द साइज ऑफ द स्लाइडर, आउटपुट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्लाइडर कम या ज्यादा करने का इम्पैक्ट क्या होगा. ठीक है. एंड द फॉर्मूला इज n minus k plus 1. n minus k plus 1. Okay. So basically what I have covered till this point is I have covered your convolution. But remember, after convolution comes your pooling. So this is what I can say is, I can say that this is the output after convolution. ठीक है. And after your convolution only you will do your pooling. ठीक है. After your convolution you will do your pooling. ठीक है. इतनी चीज सबको समझ में आ रही है? So now pooling is not done on your original image. Pooling is done on your output which you are getting after convolution. ठीक है. Now pooling would be of two types. Variant है. Pooling can be max pooling or average pooling. Max pooling or the average pooling. Pooling can be your max pooling or the average pooling. Now, so let me say I want to do, in this case, I want to do max pooling. Max pooling of size 2 cross 2. Max pooling of size 2 cross 2. Okay. Now, let me say this is the pooling. So I am saying I want to do 2 cross 2 ka max pooling. So something similar to your convolution will happen.
something similar, and that similarity will confuse you, but pooling and convolution are concept wise different. So what I'll say, I want to do max pooling 2 cross 2. So what I'll do, again I'll start the way I've started in convolution. So पहले मैं इसको select कर लेता हूँ. So what is the maximum value in this? 1. Maximum value is 1. So let me do one thing. I'll start creating the output. So मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा. Then what I will do, I'll take an entire big step. In pooling, in convolution, do you notice I was sliding 1 by 1? In pooling, your step size would be equivalent to the shape of your pooling. तो अगर तुम 3 cross 3 pooling कर रहे होते हैं, तो तुमने 3 छोड़ के करा होता. Over here, I'll take the next step. What is the maximum value over here? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2. बराबर? Then what I'll do is, I'll take one step further. यहाँ पे maximum value कितनी है? 1. ठीक है? Now what I'll do is, I'll come back over here. Overlap नहीं कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ value? What is the maximum value over here? यहाँ पे डाल दो 4. Then take one step further. What's the max value over here? 2 हो गई. Then take this part. 0, 0 डाल दो. Then and then obviously 1. Now this is the output. Sorry. This is the output after your 2 cross 2. This is output after 2 cross 2 max pooling. This is the output after 2 cross 2 max pooling. Suppose if you want to do average pooling. So this is my what? This is my output after convolution. Output after convolution. Okay. मैं अब colors को change नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? These are self-explanatory colors. So I will take this thing over here. What is the average over here? Average 1 है. Average क्या होता है? Mean होता है. चारों नंबर को ऐड करो, 4 से डिवाइड कर दो. 0.5. यस. फिर इसका नेक्स्ट का एवरेज क्या हो जाएगा? 1.5. 3/4 0.75. इसका एवरेज क्या हो जाएगा? कितना? 0.1. क्यों भाई? 0.5. 2 ही तो रिकॉर्ड है. 1 + 0 is 1. 1 divided by 2 is 0.5. तुम क्यों 4 से डिवाइड करना चाह रहे हो बाबा? इसका क्या होगा एवरेज? 6/4 तो 1.5. ठीक है, आप समझ में आ रहा है? हरे वाले का बताओ. 5/4 1.25. yes, that's the right answer. Then 0.5. फिर आइए, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा. Then 3/4 1.5. 3/2. हाँ, 1.5. Then sorry 1.5. ठीक है ना? Then 1 आ जाएगा. So if you want to do average pooling, then this is your result of average pooling. ठीक है ना? इतना सबको समझ में आ रहा है? Now, so whether you do average pooling or whether you do max pooling, the shape of the output is still same.
The output shape is still 3/3 only. ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे भी 3/3 का मैट्रिक्स आया. This is also 3/3 and the below one is also 3/3. The values inside the cells will change, but the total shape will still remain the same. The broader shape still remains the same. Now, what was my initial shape? My initial shape was 7x7. Then after I did 3/3 convolution, my shape became 5x5. And then when I did max pooling or average pooling, the shape became 3/3. Now, do you notice the original image has 49 cells and this 3/3 has only 9 cells? Do you notice the image has compressed heavily? And why this thing? Because I don't want to see the entire image. I only want to see the salient features, which can be used to distinguish between two or more objects. Okay. Achha. Now, after your pooling, so this is your pooling layer, guys. This is your pooling layer. And after pooling, I would be having fully connected layer. After pooling, I would be having fully connected layer. Fully connected layer तुमने already पता है क्या होती, बस शायद नाम मैंने पलट के लिख दिया. Fully connected layer. Another name of fully connected layer is your dense layer. Another name of fully connected layer is your dense layer. Dense layer क्या होती है? I know मैंने ये word purposefully अब तक use नहीं किया, but dense layer तुम्हें already पता है. Yes, it is a kind of hidden layer. It is in a way hidden layer where each neuron of previous layer are connected to all the other neurons of the next layer. ठीक है? All the neurons of the previous layer are connected to all the neurons of the, or I'll say each neuron of the previous layer is connected to all the other neurons of the next layer. Each neuron of previous layer is connected to all the other neurons of the next layer. याद आ रहा है? मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था. Okay, now just give me a second. So after convolution and pooling, output is like below. अब सब लोग प्लीज अपने नोट्स वोट्स बनाना छोड़ दो, सिर्फ यहाँ पे एक 10 मिनट देखो, कंटिन्यूस फोकस दो. This is your output.
So for example, if I was doing max pooling or average pooling, so my output have been something like this. So 1 to 1, 4 to 1, and then 0 to 1. So this is the output after your pooling. Okay. So convolution done and pooling done. Now what we are doing, I am going to have a fully connected layer. So fully connected layer is kind of your hidden layer. And number of neurons in hidden layer are obviously hyperparameters. Correct. And suppose you were trying to build a classifier which can identify whether the face is a smiling face or a sad face. So it means in your output layer, you would be having two neurons. Barabar? 0 and 1. Whether you say smiling as 1 or whether you say sad as 1, that is your choice. But output layer would be having two neurons, 0 and 1. The fully connected layer, in number of neurons in fully connected layers are a hyperparameter. And so tumne bol diya, I want to have just 5 neurons. Whether you want to have 5 or 500 or 50, that is your choice. So ये आ जाएगी एक fully connected layer. बराबर? Now this thing would be opened up, or you can say flatten. Remember flatten का concept मैंने MNIST data set में ही बताया था. So ये चीज कैसी हो जाएगी? It would be having 9 neurons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And the value over here would be 1, 2, 1, 4, 2, 1, 0, 2, 1. And each neuron would be connected to all the other neurons. So ये ऐसा चालू हो जाएगा. बताओ समझ में आया या और ड्रॉ करूं? आया? एक बार एक क्लास ने बोल दिया था नहीं सर ड्रॉ करते रहो. ठीक है, मजाक किया था हालांकि उसने. ठीक है, आई होप लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है ना? एंड द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू. नाउ at this stage the same concept of neural network would be applied, which you already know, right? So if the input is answered, it would be your summation of wi xi, and each neuron would be having your ReLU activation function. If input is significant, output would be generated. Output would be generated. Okay. At the starting, the weights would be randomly assigned. But again, you will pass your data into batches and you will have many iterations. So slowly your model will keep on learning. So this is basically, if you understand convolution and pooling, then after pooling, you open this up, you have a dense layer. Dense layer is nothing but a hidden layer. Number of neurons in hidden layer are hyperparameter. So this 50 is just for example purpose. You can have 5 also, you can have 50, 25, 10, 11, whatever. And then in output layer, obviously you would be having 2. Why? Because you are building a binary classification. अगर तुम MNIST data build कर रहे हो तो आखिरी में 10 आ जाते, because you would be having 10 classes. ठीक है? And then the same process continues. Summation of wi xi. ठीक है ना? And from your pooling, your model will keep on getting trained. ठीक है ना? इतनी चीज समझ में आ रही है? अब एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं. So remember when I said I am taking in my convolution layer, I have taken an example. In my example, I have taken the convolution slider as 3 by 3. And I have taken some values. Slider के कुछ values मैंने लिए थे ना? क्या values थे? What were the values? 0, 0, 1, 0, 0, 1, and then 0, 1, 1. ठीक है ना? So I had taken a slider of 3 by 3, and I have taken the values 0, 0, 1 or 1, 0, 0. So now the question एक आता है, how to decide the shape of slider.
And another question is how to decide the values inside the slider. So 001 या 100 या 011 कैसे डिसाइड करोगे वैल्यूज? सोचो। एक हिंट देता हूं, आंसर पता है तुम लोग को, अगर दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। है रैंडम, कौन सी वैल्यू रैंडम? The value should be randomly assigned. Okay, ठीक है. And then shape of the slider. Okay, okay. तो डॉट प्रोडक्ट तो बाद में आया ना, पहले तो स्लाइडर आया ना। यस, क्या चीज हाइपर पैरामीटर है? साइज ऑफ द स्लाइडर इज अ हाइपर पैरामीटर। तो तुम्हें 3x3 लेना है या 5x5, नॉर्मली ट्राई टेकिंग ऑड नंबर, या 4x4, दैट इज अ हाइपर पैरामीटर। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इफ यू इंक्रीज द साइज ऑफ द स्लाइडर व्हाट विल हैपन, ठीक है। और इफ यू डिक्रीज, नोट डाउन करो सब लोग, साइज ऑफ अ स्लाइडर इज अ हाइपर पैरामीटर। साइज ऑफ अ स्लाइडर इज अ हाइपर पैरामीटर। अब आ जाओ इसके अंदर की वैल्यूज। इसके वैल्यूज को कैसे डिसाइड करोगे? Yes. So values inside the slider are not a hyperparameter. User does not passes them. Model will take some values. कुछ भी values ले सकता है. And these 0 and 1s are just a representation. The values can be less than 1 also. And values can be more than 1 also. Okay. Again, I am saying values, this 0 and 1 are just in this example. They can be less than 0. Basically, these values would be acting like your weights. So model will start with any random values and then slowly it will learn the best set of values. So you don't need to worry what should be the values inside it. Model खुद पता लगा लेगा। इतना याद रखो, बच्चा कैसे सीखता है वैसे ही वो सीखेगा। स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे सीखना चालू कर देगा। ठीक है। Now let's come to this second part. So size of the pooling. अब तो आंसर सिंपल है, हो गया। Size of the pooling, whether 2x2 or whether 3x3, what would be it? It would be hyperparameter. Pooling का size तुम decide कर सकते हो. And obviously whether you want to do max pooling or average pooling, again a hyperparameter. देख रहे हो कितने सारे hyperparameter आते जा रहे हैं combinations में. Hyperparameter, maximum pooling or average pooling. So size of a pooling is a hyperparameter. Whether you want to do max pooling or average pooling, that is also a hyperparameter. बस अब एक 15 मिनट और थ्योरी खत्म होने को आ रही है। तो जिन लोग को भूख लगी, चाय पे जाना चाहते हैं, थोड़ा वेट करो। मैक्सिमम पूलिंग और दी एवरेज पूलिंग इज अगेन अ hyperparameter. Check what? Yes. तुम्हें पता है जब न्यूरल नेटवर्क की थ्योरी कर रहे थे तो मैंने एक सेंटेंस बोला था, ट्यूनिंग ऑफ हाइपर पैरामीटर द ट्रिकी टास्क।
तो yes, it is a tricky task. स्टार्ट करो और ट्राई करो. अगर मॉडल अच्छा नहीं आ रहा तो कीप ऑन चेंजिंग हाइपर पैरामीटर. देयर इज नो आंसर विच हाइपर पैरामीटर टू बी यूज्ड. डिफरेंट डेटा पे डिफरेंट. ठीक है. मैं तुम लोग को एक इमेज दिखाना चाहता हूँ. इफ आई कैन गेट दैट इमेज, अदरवाइज आई विल रिक्रिएट इट. क्या हो गया, क्या हो गया, इतनी बात हुई. सन्नाटा सिर्फ तभी आता है जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ. हाँ, अच्छा चलो. क्या हो रहा है? अरे लेट मी ओपन अ न्यू पेज. तो कुछ इशू होता है. अच्छा, अब सब लोग प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखो. पेंट विंडो दिख रहा है? ठीक है. नाउ चेक ऑन द फर्स्ट पार्ट. चेक ऑन द दिस वन. सिर्फ इतने पार्ट को जरा देखो. चेक ऑन दिस पार्ट. ये वाले इमेज को जरा ध्यान से देखो. देखो क्या हो रहा है. and try reading some documentation also जो मैंने लिखा हुआ है. So consider this is your original image. This is your original image. ये तुम्हारी original image. ठीक है ना? Now can you notice in this original image the values are suddenly changing. From 10 they suddenly become zeros. From 10 they suddenly become zeros. And this is your kernel, or you can say this is your filter, the matrix which you slide on your convolution. Okay. So after sliding this thing, can you notice the output is very distinguished. In between you are having high numbers, and on the left and right hand side you are having low numbers. So if that was your original image, this is the slider. Do you notice that this slider is very good for detecting the vertical edges? जो दीवार है उसको identify कर सकता है. So if it is a vertical image, then the values left and right of the vertical images will change heavily. Values are in the pixel values. Pixel values में sudden change आएगा, right? So what is an object? The object consists of your, what I can say, any object, even if it is a face also, or any object, it will consist of lines. It will consist of lines, and wherever lines intersect, you are creating the points, and when you join these points, you get an object. ऐसे ही तो होता है ना object. So if you have to create a image of an object, this is how you would be creating it, right? Now, so it means if you want to detect an object, you should know
where the vertical edge is coming or where your horizontal edge is coming. So this filter or the kernel is very good, or it's working good to identify the vertical edges. Barabar. Suppose if you are trying to identify a face, your nose can be taken as a vertical edge. So this kernel can identify your nose, but then it cannot identify your lips because lips are horizontal. So a kernel which can identify the vertical features probably cannot identify the horizontal features and the vice versa. अब जरा नीचे वाली इमेज को देखो जिसको मैं पर्पल में मार्क कर रहा हूं, देखो जरा ठीक उल्टा होता हुआ दिख रहा है, just opposite. So this kernel can identify your lips, because let me say if you want to identify the face of person A and person B, then you have to identify the lips, eyes, ears, nose, and then only you can make a final distinction. Right? So if you want to identify the lips, then you are supposed to use the kernel B and not the kernel A, because lips are like your horizontal and nose is like your vertical. So the idea which I want to convey to your brain is that one kernel or one slider is not enough. It is not enough for a image. एक ही स्लाइडर से सब काम नहीं हो सकता. Suppose you want to identify the cheeks, so cheeks may be round, तो कुछ अलग टाइप का करना चाहिए, right? So one slider is not enough. So you want multiple or many sliders. Now multiple or many slider means how many sliders? Barabar. Now how many slider again becomes your hyperparameter. देख रहा हो बढ़ते चले जा रहा है. Make a note of it. सबको इतना आइडिया समझ में आ रहा है? एक स्लाइडर से काम क्यों नहीं बनेगा? एक ही स्लाइडर सब कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. ठीक है? So that is why you need a multiple slider. And how many slider? Again a hyperparameter. Can I show what? ये मैंने इसमें क्या खास है? सबको इतना समझ में आ रहा है? Now I am trying to discuss few small concepts within convolution and pooling. Guys, what if image as an original image is a colored image? If an image is a colored image. If an image is a colored image, it means this image would be in your 3 dimension. Length, breadth, and 1 dimension would be of color. Color होते हैं सिर्फ 3, RGB, red, green and blue. ये 3 होते हैं primary color.
इन्हीं के कलर के इंटेंसिटी से, इफ यू मिक्स दीज कलर्स एट डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी यू कैन क्रिएट एनी कलर. ठीक है. सो इफ इमेज इज अ कलर इमेज, सपोज when your image is a gray image, that is your black and white, then image would be 2 dimension. अब जरा ध्यान देना. Suppose if I had a same 7x7 image, so 3 4 5 6 and let me say 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, 7x7 है. Now if you had a slider of 3x3 का slider, then what you would have done, you would have taken this slider over here, correct? And then you would have taken the next step, you would have taken something like this, right? And at the end your output was 5x5, which was nothing but again 2 dimension. 2 dimension में तो था ना, length breadth height तो था नहीं. But if your image is a color image, if your image is a colored image, and again let me create this 7x7. Okay, if this is your 7x7, क्या ये image 2 dimension है या 3 dimension है? It is still 2 dimension. ठीक है. But the 3 dimension image would be something like this. अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इतनी अच्छी जरूर बना दूंगा कि तुम्हारे दिमाग पे फिट हो जाए. Okay, now this thing would be your 3 only. उसकी डेप्थ 3 है. Why? Because RGB. ठीक है ना? सबको इतना फर्क समझ में आ रहा है ना? What is the difference between square and a cube? बस वही सेम चीज है. यहाँ पे image is nothing but a cube. Since image is a cube, now this becomes your 3 dimension. Now what is the dimension? Dimension is 7x7 into 3. ठीक है. अब जो स्लाइडर आएगा उसमें एक चेंज आएगा. So let me say I was taking the same slider 3x3 का, but now this slider would also be 3 dimension. Automatically तुम्हारे कहे बिना वो 3 dimension में ही काम करने लग जाएगा. If it is a colored image. Now, what I will do is you take this entire slider and put it over here. So what it will do, select this piece of cake. So let me say this cell number A would be multiplied with this 1. This B would be multiplied with 2. Plus C would be multiplied with 3. This D would be multiplied with 4. E would be multiplied with your 5. E के बाद क्या था? E, F, G, H, I, J. H would be multiplied with 7 and then 8, then 9. ठीक है? Plus, plus, plus. And then this thing will continue. Okay? So at the end, do you notice your output would again be कितना हो गया? 1 2 3 4 5. Output is again your 5x5, which is nothing but again 2 dimension. So whether image is colored or image is black and white or gray, convolution output is always 2 dimension. इसको note down करो, कभी confuse नहीं करना लाइफ में.
whether image is colored or whether image is black and white, that is gray, which we call, the shape of the convolution is always two-dimension. Shape is always two-dimension. Basically, the color doesn't have any impact on your shape. The internal values may obviously change. They may change, but shape change नहीं करेगा. समझ में आया सबको? अब एक लास्ट कंसेप्ट, पैडिंग का concept. And if the shape of convolution will not change, then I hope people understand that pooling में कोई फर्क नहीं आएगा. Pooling will still remain the same. Pooling will still remain the same. Pooling would be two-dimensional. Now, one last thing, padding. ये padding का मतलब क्या होता है? What does padding means? English meaning क्या बताओ? Padding मतलब कवर करना. ओके, ठीक है. क्यों करते हैं padding? For safety or for protection, whatever. ठीक है, ऐसा एक काम करते हैं. Let me say your input image. अब थोड़ा quick calculation चाहिए मेरे को guys. Let me say your input image is 28 cross 28. Okay. In your convolution, you are doing 5 cross 5. Then what's the output? 24 by 24. ठीक है. On this convolution, let me say you are doing 2 cross 2 pooling. अब कितना आ जाएगा output? अरे 12 by 12. Pooling से 12 by 12. And minus k plus 1 convolution में लगता है. ठीक है ना? So output would be 12 by 12. Now on this 12 by 12, again if you do a 5 cross 5 pooling, then what would be the shape? 12 minus 5 plus 1. 12 minus 5 कितना होता है? 7. 7 plus 1 is 8. On this 8 cross 8, if you again do the pooling, 2 cross 2 का pooling, then shape becomes 4 by 4. So the original image was 28 cross 28. After 2 times of convolution and 2 times of pooling, the image has become 4 by 4. Now this 4 by 4 image is very small. इस पे अब कुछ और convolution pooling का जरूरत नहीं है. It has become already very small. ठीक है. अब इसमें कुछ करने जाओगे तो कुछ बचेगा ही नहीं. ठीक है. So it's already very small. ठीक है. So sometime the requirement may be that you want to do a little more pooling or little more convolution, a little more convolution, a little more pooling. So that is where I use the concept of padding. Padding basically, let me say, if you are trying to shift your house, तुम अपने घर को shift करना चाह रहे हो and there is some crockery items. Or let me say you have ordered a mobile phone. तो देखते हो कंपनी वाले उसको काफी पैड करके बेचते हैं. ठीक है ना. उस पे फेविकोल नहीं क्या लगाते हैं, थर्मोकोल और whatever that air bubbles spray है ना, पैडिंग करते हैं so that it doesn't get damage. But whether they put thermocol or air bubble, shape तो increase कर जाता है. The object which was just 1 inches may become 3 inches or 4 inches, right? So the concept wise, that is why probably the word pad has been used. But in padding, in this neural network, CNN, padding means adding extra layers of zeros. Please make a note of this line. Adding extra layers of zeros on the outer boundary. अंदर की इमेज में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बाहर में extra zeros. On the outer boundary. You add extra layers of zeros on the outer boundary. Okay. If this is your original image,
let me say this is your original image, whether it is 7 cross 7 or 100 cross 100 or whatever, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, if this is your original image, and if you want to use the concept of padding, then after your padding, your image would be something like this. If this is your original image, then all these zeros are indicating your padding. So you basically add the extra zeros so that the dimensions do not reduce very fast. Another thing is, if you want to use the pad, if you want to use the concept of padding, it has to be applied. It has to be applied at the very starting. At the very starting. Agar padding concept use karna, if you want to use the pad, then apply it at the starting. At the starting means even before the first convolution. ऐसा नहीं हो सकता that you have done first convolution and then you add a padding. No, that is not possible. Even before the first convolution, you add a pad in concept, so that you preserve the spatial relationship also, and the images size do not reduce that fast. So padding means adding extra layers of zeros. Okay, let's go to the sliders. 1-2 minute और and then sliders दिखते हैं सबको? दिख रहा है? PPT दिख रहा है? ठीक है. So now probably you will understand all the things. So can I say now people understand what is this slider, what is this image computing the dot product? ये clear है? FNG छोड़ दो, वो तो just नाम दिया. Advantage of CNN over MLP, CNN due to concept, convolution pooling, each layer. अच्छा, keep one thing in mind, CNN gives you good results, but CNN takes huge amount of computation power. तुम्हारा लैपटॉप में फील होगा कि तुम्हारा लैपटॉप में कुछ रन होगा. So pooling and fully connected layer. Read करो please तुम. पढ़ो. What is pooling? Yes. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? So remember in pooling
We are reducing the dimensionality. So same thing, application of CNS applications. So how CNN works? CNN works on hierarchy of features. It means in the initial layer, the basic building blocks of the objects are identified. For example, initially the edges are identified. Combination of edges make the corner. Combination of corner forms the more complex images. Edges are the basic building blocks of the images, and they are the lowest level of granularity. So edges. Okay, guys, see, when you are building CNN model, you don't need to tell where the edges are, because model would be learned as the way human beings learn. हमने कभी फेस आइडेंटिफिकेशन या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन उसके एंगल से नहीं सीखा, देखा और खुद धीरे धीरे सीख गए. So the model itself will learn which edges are important and to be considered, which edges or which features are not important and can be ignored. किसी का फेस देखने के लिए उसके ईयर्स को देखने की जरूरत नहीं है, बिना ईयर्स देखे ही बता सकते हो, इग्नोर कर दो, ठीक है ना. सो वही सेम थिंग्स कैन अपीयर ओवर, ठीक है, इग्नोर दिस. अब ये जरा देखो, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, and then object detection, and then instance segmentation. So basically you should be able to read the image, within the image which is the object of your interest, object to detect करना, and then segment. And then ये example मैंने just दिया है, all these are my example. Now see, basically for calculation purpose I have taken 1 and 0s, but the original image may not always have 1 and 0. It can have any higher number. It can have values till 256, 255 or 256, 256. It can have values till 256 or 255, whatever. And this may be your kernel. So ये चाहना तो calculation कर लेना. Kernel for horizontal vertical detection already explain कर दिया, ये भी explain कर दिया. Sharpen or blur the image. Sharpen and blur the image. देखो. अच्छा, इन दोनों जरा images को देखो. Can I say the below images you blurred? ब्लर हो गई है? ब्लर कैसे हो गई? बिकॉज अगर मैं कर्नल को स्लाइड कर दूं और वैल्यूज रिड्यूस कर दूं, इफ आई रिड्यूस द पिक्सल वैल्यूज द इमेज विल गेट ब्लर्ड, ठीक है ना. सो इफ यू वांट यू कैन शार्पन एंड ब्लर द इमेज. इन ओपनसीवी वी विल सी दैट, ठीक है. नाउ रिड्यूस द मिडिल वन -4 एंड इंक्रीज द वैल्यूज ऑफ योर एजेस. देखो यहाँ पे -4 डाल दिया मैंने, ठीक है, तो सारे वैल्यूज हमारे कम हो गए. कूलिंग ऑलरेडी बता दिया, ये सारी चीजें ऑलरेडी. पैडिंग, पैडिंग कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस, कुछ नथिंग न्यू नहीं. सो बेसिकली क्या कर लिया हमने, पेन विंडो दिख रहा है? कोई बता सकता है मैं क्या बताने वाला हूँ? खत्म हो गया, ठीक है. थ्योरी पार्ट कम्स टू एन, थ्योरी का एंड हो गया और कुछ नहीं. व्हाटएवर इज लेफ्ट इज योर कोड, ठीक है, जो कि हम लोग करेंगे टुमारो, ठीक है. तो बेसिकली टुडेज क्लास इज द एंड. अब तुम लोग लंच ब्रेक लो या टी ब्रेक लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है. बट वन एक्सपेक्ट, आई हैव जस्ट वन एक्सपेक्टेशन गाइस, प्लीज आज के दिन CNN पढ़ के आ जाना. अगर ये चीजें याद रही तो ही कोडिंग समझेगा, ठीक है. कॉन्वोल्यूशन, पूलिंग, व्हाटएवर, व्हाट इज रेल, वो सारी चीजें रिवाइज करके आना, कि दे शुड बी फ्रेश इन योर माइंड. एंड वंस दे आर फ्रेश, coding would not be that difficult, keeping in mind that we have already seen how to build how to use our railway and all those things in our system, ठीक है ना. ठीक है guys, so with this I'll end the session. Thank you. Excel sheet में अभी चैट पे भेज देता हूँ, अदरवाइज रह जाएगा. घर पे जाके देखोगे या बस शौक है लेने का? है? ले लेते हैं ना, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे अलग की बात है. कीजिए 32, डेट क्या है आज की? 18 सितंबर.
अरे कैसे शेयर होता है बाबा? चैट में शेयर होता है ना? अच्छा, तुमने मुझे रोक ही लिया शेयर करने के लिए, तब थोड़ा 5 मिनट और रुक जाओ, कुछ चीजें और कर लो। किसी ने बड़ा लाउड रिएक्शन दिया, बट इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। गाइस देखो, शीट आया। इतनी हिम्मत। हाउ अबाउट नाउ? आया? अच्छा ठीक है। गाइस 1 more minute बस। अच्छा, see, basically for tomorrow's class, do one more thing. Create your data. So in tomorrow's session, what we will do is, first of all, we'll try to build a model on MNIST data. Okay, which is already there in your CSV format. Okay, so nothing to be done for this MNIST. But हम कब तक ये CSV फाइल करते रहेंगे? कभी तो हमें आगे भी बढ़ना है, ठीक है? So now what we'll do is, after this, probably this will not take much time. Let me say just 30 minutes, because you already have the data and you are already familiar with the MNIST data. So we'll directly go ahead and create the CNN architecture. We'll create a CNN architecture and invoke it. But हाँ, शायद ये थोड़ा time ले. After that, what we'll do is, we will try to build a CNN model directly on the raw images. But raw images तुम्हारे लैपटॉप पे होंगी तभी तो build करोगे. तो तुम्हें करना क्या है? You have to. So what we will do is, first of all, we try to build a dog and cat classifier. ठीक है? अब चाहना तो तुम images Kaggle से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट तुम्हें कैसे डाउनलोड करनी है, the way you need to store, storage part में तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें कैसे करना है. So first of all, in your some drive, whether it is your G drive, F drive, don't take it as your C drive. C drive में मत करो. If you are doing that, is still okay, but it will take huge amount of space. So let me say, in your G drive, you create one folder. Folder का नाम रख देना dog cat. ठीक है? Inside this folder, create 2 more folders. एक का नाम रख देना dog और एक का नाम रख देना cat. In your dog, keep only dog images. इमेज के नाम कुछ ऐसे रखना, img1, img2, img3 और any name, but 1 2 3 रखोगे तो याद रहेगा. And cat वाले में
सो सपोज करो डॉग का इमेजेस को कुछ ऐसे रख देना, D1, D2, D3, D4, D5, whatever, and within cat C1, C2, C3, C4, C5. ठीक है, whether it is PNG or JPG, that is your choice. Try going for PNG if possible. So again, I am repeating. Let me say in your G drive, create one master folder, dog and cat. Within that dog and cat, create two more folders, dog and cat. Dog के अंदर में सारे dog के images, cat के अंदर में सारे cat के images. Minimum 50-50 images सब में डालो, 50 dogs की and 50 cat की. ठीक है, तो 2-3 लोग कर लेना, बाकी लोग शेयर कर लेना जैसा मन करे. ठीक है, या जैसा मन करे. ठीक है, probably if you go to Kaggle, you can download these images. Kaggle पे जाओगे तो हजारों images मिल जाएंगी. But as of now, what I'm saying is don't take many thousands of images. Later on लेना, because फिर अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी. जब डेटा लार्ज आ जाता है ना तो ब्रेक करके समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. Go for at least 50 or 100, nothing less than 50, and any value which is more than 50 is still okay. I don't deny that. सबको इतना समझ में आया? पहले एक डॉग एंड कैट फोल्डर बनाना, उसके अंदर 2 और फोल्डर. ठीक है, एंड दे शुड नॉट बी जिप फोल्डर. जिप मत करना. ठीक है ना, नॉर्मल रखना. ठीक है, एंड दैट इज आई एम सेइंग डोंट क्रिएट इट इन योर C drive. ठीक है गाइस, सो विद दिस आई एंड द सेशन. थैंक यू.